that's actually a complete path there. It's there. I mean, you've got the whole thing, because then it gives you options and gives you a full picture of what the possibility is, and to give the mind that broad perspective of what one can be doing. But really any of the steps will take you to liberation, if you, because that's just the way it works. But as we're going through you got to start from one point and go to another if you're giving instruction. So the next step is in the Jittapati Sangveti. So breathing in, experiencing, training us experiencing the mind. I breathe in, experiencing the mind. I breathe out. So you think, oh, what's that mean? And it's really sort of like understanding or getting a feel for the content, the mood of the mind. It's like in the Satipatthana Sutta, when the section on the mind is because knowing the mind of greed, or having seen a mind of greed, one knows there's a mind of greed. When there's a mind without greed, one knows it's a mind without greed. When there's a mind of aversion, then one knows it's a mind with aversion. When there's a mind without aversion, you know it's without aversion. So it's like this. Okay, the content of the mind, the mood of the mind, or the mind is agitated, you know the mind is agitated. The mind is settled, you know the mind is settled. It's not sort of second guessing or proliferating. Well, that's the experience. So that sense of experiencing, sensitive to the mind when it breathes in. And then, so there's a reflective quality there as well. It's not like there's the perfect mind that you're going to have to get in order to be the accomplished meditator. It's just really learning from and being attentive to what the state of the mind is, because then that's what you work with. You work with what you got. And then the next step is gladdening the mind. Just train this again. The sense of training thus. Gladdening the mind. I breathe in. So that's consciously directing attention to what is it that gladdens the mind. Abhi, which is again, as Abhi is an amplifier. Pamoda or Pamoda, it's a delight. It's good, and it's important to have some kind of gladness, delight, joy, and that's where again, like Buddha no Sakti, Dhamma no Sakti, Sangha no Sakti. Recollection of the Buddha, recollection of Dhamma, recollection of Sangha, recollection of generosity, recollection of virtue. It's like just really bringing to mind the wholesome actions that one has engaged in. It really gladdens the mind, and you're doing that as one breathes in, as one breathes out. It's not like you just try to annihilate any kind of thought, and then if you can just stop this mind, if this mind would just shut up, then I'd be enlightened. No, you'd just be tense. It'd be, you can, because you can do that through a force of will. You can push the mind down or push it away, push thoughts away, but it doesn't make the mind happy.
So that it's actually gladdening the mind is an important step, because it's because oftentimes when we approach meditation and practice, we recognize that there's suffering. We keep our mind. The mind keeps like a dog going to a bone. It just sort of chews on that suffering and just thinking about it, and then you come up with this kind of equation. I think, therefore I suffer. So then it's logical. Well, if I didn't think, then I wouldn't suffer. But it really doesn't work like that. Because the problem isn't the thinking. It's the actual suffering. It's learning how to direct attention skillfully, learning how to apply thought and attention in a skillful way. So that directing attention to what gladdens the mind. And it's like a wholesome, it's like Ajahn Kavali mentions that the Dana reflection of a wholesome pride. I mean, it's not a bad thing. Something it gladdens the mind when one recollects the good actions or the wholesome connections that one's made with people. So this is when one lifting that up into the mind, the heart really becomes bright, and then it can settle. There's a very frequent sequence of teachings that the Buddha gives, because the foundations of the Buddha's teachings are in causal processes. With causes and conditions like this arises. When these causes and conditions are not there, this ceases. It's a fundamental basis of the Buddha's teaching, and in many of the discourses, the Buddha points to a series of causes and conditions for the developing of the mind, the developing of the path, and there's a variety of starting points. With it could be suffering, it could be faith, it can be wise attention, it can be sila, but then it goes into this with those various things. Then there's the arising of pamoja, of delight, gladness, and with that as a delight as a cause and condition is arising of joy, piti, and then with the piti as a cause and condition is arising of passaddhi, a tranquility. That's a sort of a physical, mental, and becoming settled and tranquil. And with tranquility as a cause and condition, it's arising of sukha, sort of happiness. And similarly, that sukha tends to pervade the body as well. And then with sukha as cause and condition is arising of samadhi, of concentration or settledness of mind. And in some of the discourses, a few of them, the Buddha actually stops there and actually says, the happy mind is easily concentrated. And it's and I found that a revelation. I think it's the same for most people, because I tend to work at it backwards. Sort of, when I get meditation together, then I'm going to be happy. But that's not how the Buddha works. And the Buddha says, when you get your happiness together, then your meditation goes well. So that finding the roots of
Okay, gladdening the mind, settling the mind, really tuning into. Because there's different kinds of happiness. There's happiness that's really sticky and messy and really confusing. But that's not what the Buddha's pointing to. He's pointing to the wholesome roots of just like that wholesome pride of in one's good actions. It's a really it's an important source of well-being and settling, and it's with that settling that the under knowledge and vision, and that's how yatha buddha jnana dasamana arises with samadhi as causing condition, and there's the arising of knowledge and vision of the way things truly are. कई बार हम ऐसा समझते हैं कि जैसे ये जो स्टेप्स हैं भगवान ने बताया 16 स्टेप्स हैं, तो पहले पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते 16 हो जाएंगे, तब हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो हम एक लीनियर समझते हैं कि पाथ जो है सीधा एक ही लाइन में चलता है। ऐसा नहीं है। जब हम पूरा पैकेज देखते हैं, पूरी बात को समझ जाते हैं, तो हम कोई भी पार्ट को पिकअप एनीथिंग, कोई भी आयाम उसका लेके उसको एक्सप्लोर करें, तो हर स्टेप जो है हमको अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सक्षम है। तो ये हमको इसको लीनियर नहीं समझना चाहिए। आगे की जो इंस्ट्रक्शन में आती है, चित्त पट संवेदी की सांस लेते हुए चित्त को, सारे जो मन है उसको एक्सपीरियंस करता है, सांस को छोड़ते हुए मन को एक्सपीरियंस करता है। तो मन को एक्सपीरियंस करने का क्या तात्पर्य है? तो लुंगपुर ने बताया कि हमारा ध्यान आकर्षित किया सतिपट्ठान सूत्र की ओर, जहाँ पे चित्तानुपश्यना में कहा जाता है कि मेरा चित्त में राग है तो मैं जानता हूँ राग है, दोष है तो जानता हूँ दोष है, चित्त राग विहीन है तो जानता है, चित्त दोष विहीन है तो जानता है, चित्त अगर एजिटेटेड है तो जानता है, चित्त में प्रपंच हो रहा है तो उसको जानता है। तो इसलिए चित्त प्रति संवेदी का मतलब है कि चित्त के प्रति एक हम संवेदना है, उसके प्रति ध्यान जानने की इच्छा है, वी आर सेंसिटिव टू द स्टेट ऑफ माइंड, और हम इस तरह से उसके साथ काम करते हैं कि चित्त की जो वस्तु स्थिति है, सांस को अंदर लेते हुए जानते हैं चित्त की स्थिति क्या है, सांस को बाहर छोड़ते हुए जानते हैं चित्त की स्थिति क्या है। अगला स्टेप आता है ग्लैडनिंग द माइंड, अभी प्रमोदिति। तो जैसे बंते जी ने फिर बताया, अभी जो है शब्द वो क्वालिफायर है, इंटेंसिफायर है। प्रमोदिति शब्द जो प्रमोद से बनता है, प्रसन्नता से, प्रीति प्रमोद हिंदी में हम शब्द समझते हैं प्रमोद। तो सांस को लेते हुए, अंदर लेते हुए प्रमोद जागता है, प्रसन्न होता है, खुश करता है चित्त को, और सांस को बाहर छोड़ते हुए चित्त को प्रसन्नता से काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ध्यान कॉन्शियसली चित्त को प्रसन्न करते हैं, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं। तो प्रमोद कैसे जागेगा, उसके लिए अब बंते जी ने याद दिलाया कि बुद्धानुसति, धम्मानुसति, बुद्ध की, भगवान बुद्ध की अच्छी क्वालिटीज़ को याद करना, जैसे हम अपनी चैंटिंग में भी करते हैं, धम्मानुसति, संघानुसति, सब हम चैंटिंग करते ही हैं। तो वो सब चीज़ें जब हम सचमुच में इसको याद करते हैं तो मन में प्रीति प्रमोद जागता है, प्रसन्नता जागती है। अपने पुण्यों को याद करते हैं, अपने शील को याद करते हैं, तो उससे प्रसन्नता जागती है, और जब प्रसन्नता जागती है तो चित्त की हमारा आगे साधना करने में सहायक होता है। कई बार हम ये एक इक्वेशन सी बना लेते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ दुख होगा, तो दुख बढ़े घटे नहीं। तो हम चित्त को प्रसन्न करना है। कई बार हम ये भी करूंगा, ऐसा करूंगी तो फिर मेरा चित्त प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। चित्त को प्रसन्न करो और फिर आपकी साधना अच्छी होगी। तो ये बात हमको ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जो एक कोई हम अच्छा काम करते हैं तो उसको बात के अंदर हम प्रसन्नता लेते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि सुबह अजान केवली जब अनुमोदन कर रहे थे तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया होलसम प्राइड, मतलब अपने पुण्यों में प्रसन्नता रखना, अपने पुण्यों में लेके खुश होना। तो बहुत अच्छी बात है, तो उससे मन प्रमोदित होता है। बट वो क्वालिफायर उसमें था होलसम,
एक कुशल चित्त वृत्ति से। और इस जब मन प्रसन्न होता है तो चित्त हमारा बहुत स्पष्ट हो जाता है, ब्राइट होता है। और भगवान, अगर हम ये समझते हैं कि हम साधना से चित्त प्रसन्न होगा, तो भगवान हमें कहते हैं कि प्रसन्न चित्त से साधना अच्छी होगी। तो बंते जी ने एक पूरी कॉजल प्रोसेस हमें याद दिलाई, जो एक बेसिक टीचिंग है भगवान की, कि ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, कारण और उसका इफेक्ट, वो बात जो है भगवान की फाउंडेशनल टीचिंग है। तो इसी तरह उन्होंने, भगवान ने कई सूत्रों में बताया है कि चित्त को डेवलप करने के लिए, मन को डेवलप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे हमारा चित्त डेवलप होता है। तो उसके कई सारे आयाम हैं। कई बार सफरिंग को लेके बताया है, कई के दुख को लेके, कई बार श्रद्धा को लेके, फेथ को लेके, कई बार शील को लेके। तो सबका उद्देश्य यही है कि प्रीति प्रमोद जागे, प्रसन्नता जागे। और फिर प्रमोद से आगे पूरी कंडीशनल रिलेशनशिप बताई है। प्रमोद जो है वो कंडीशन है उसकी प्रीति की, प्रीति कंडीशन है प्रसिद्धि की, प्रसिद्धि होगी तो उसके आधार पे सुख होगा, और सुख होगा तो समाधि होगी। तो ये बात हमको बहुत ध्यान करने योग्य है कि सुख की कंडीशन होगी, मन और शरीर प्रसन्न होगा तो वही समाधि हमारी उपलब्ध होती है। तो ये जो अवधारणा है कि मैं साधना से मेरे को प्रसन्नता होगी, वो शायद भगवान की शिक्षा के अनुरूप नहीं है। तो भंते जी ने कहा कि व्हेन यू गेट योर हैप्पीनेस एक्ट टुगेदर देन माइंड विल बी कंसंट्रेटेड, नॉट द अदर वे अराउंड। तो हमको जब ये चित्त समाधि पुष्ट होगी तो उसके बाद यथाभूत ज्ञान दर्शनम की बात आएगी कि जो जैसा है उसको वैसा ही जानेंगे, और फिर आगे हम पन्या के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। So we've been going on for over an hour, and I think it's I don't want to overwhelm people with instruction, but I think it's getting a feel for the kind of options of how to direct attention, how to use the breath, how to direct attention to the experience of the mind, and reflect on that experience, and then establishing with the experience and the rhythm of the breath, the experience of the body as an anchor, and developing that a strengthening and supporting of mindfulness and awareness. And as that awareness is, but it's also, there's a reflective quality in the sense it's one is not, and again, not thinking about experience, but reflecting what is the result, what's a good direction to go in, and experimenting with it, holding it up to the mind as a question sometimes. Oh, is this working? Is it not working? What would help to settle? What would help to bring more clarity? So I'd say it's an exploration, and from that, then there's the mind takes a delight, and then it settles and becomes more clear. Maybe tomorrow we continue to explore this. बंदे जी ने कमेंट किया कि 1 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको ओवरवेल्म नहीं करना चाहते। तो बेसिक मुख्य बात यह है कि साधना के इतने आयाम हैं, तो हम किस तरह से अपना ध्यान अलग अलग आयाम पे कर सकते हैं, मन के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और शरीर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सांस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि हमारी सति और सजगता जो है पुष्ट हो, माइंड, और जो हमारी अवेयरनेस है उसमें भी एक रिफ्लेक्टिव क्वालिटी है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, ताकि हम ठीक से देख पाएँ कि क्या हमारे लिए ठीक है। तो एक प्रयोगात्मकता भी होनी चाहिए, पेरेंटिंग एक्सपेरिमेंटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे मन में रहे कि मैं किस तरह से अपने चित्त को, इस अनुभव को जो हो रहे हैं उसको किस तरह से समझूं, ताकि मेरा चित्त और क्लियर हो सके और प्रसन्नता हो। तो बंते जी की अभी समझ गया, अब आगे चर्चा करेंगे।
So I think we should pay tribute to Bhante for a wonderful talk, especially personally. Thank you very much for acceding to my request. Thank you very much. So we'll all do chanting of Anumodana. Andamayang Dhamma Kathaya Sadhukaram Dadamase. Sadhu, 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 Anumodam. Thank you very much. Okay. Any questions? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं? Couple of questions, because after meditation instruction, it'd be good to actually meditate. Yeah, we could do that. Yes, we'll have a, We could have a bit of a break. and meditate, and the questions tomorrow we could take. Oh, okay. Well, she's fired up already. Go ahead. Okay. Yeah. And then we'll have a break. Yeah. Okay. When we talk of concentrating on the breath or on your sensations, you're saying your mind is watching your breath and the sensations happening in the body, and that's how you bring peace or stabilize the mind. But when you say be mindful of the mind, who or what is watching the mind then? Because I mean, I don't know. I don't know if I'm able to ask the question properly. Yeah. Well, I mean, I think one of the things is just that sense of recognizing that there is awareness, or there is a capacity of the mind, and it isn't, and that's what happens in how do you say, the fundamental delusion. There's actually a me there, or there's a something that is an idea. It really is. These are mental phenomena that we can. It's not that it's like one is disassociated with it. Like but it's these are and that's why we have to get to know it and get to see it, and that's how we can become free from it, is because these are causal processes that don't need a who or a me or a what behind it. It's just there's causes and conditions that bring about certain effects. And we can understand that and not buy into the delusion of selfhood or identity, and that's where our freedom lies. So the attention, and then even the knowing of that. I mean, it arises and ceases and has its own causes and conditions for its waxing and waning and shining forth sometimes and getting clouded over. So it's really taking an interest in these causal processes of the mind, in the same way that one would pay attention to the causal processes of. I mean, your focus is on business. Okay, yeah. So you've got to figure out the causes and conditions for how this business works. It isn't as if there's something, the essence of business that is there, that is making it all happen. It's these are causal processes, or somebody who's studying, Dr. Dar's a mechanical engineer, so the processes of within a particular project that you're using, applying the knowledge of a mechanical engineer to,
those are causal processes. And so the same thing with our mind and our emotions, our feelings, our thoughts. And these are causal processes that we can understand and be free from. It doesn't mean, again, it's not disoriented or disassociated from it. It's because we understand it, and then we're not creating suffering around it. We're not creating problems with either, say, gain or loss or praise or blame or the sense of how the world tends to respond and how we tend to respond, because we want to experience pleasure and we don't want to experience pain, and then we create a sense of personal value oftentimes because we're I really I'm feeling good, so I'm a good person. Or I experience some disappointment. I must be a terrible person because this has happened to me. No, that's the function of delusion. So, as having that awareness of how the mind works, how feeling and perception and emotion, reactivity, how it all works. And in seeing that, then we're able to become truly peaceful, truly free, really. Before translating, I'd like to share with you a joke about not understanding causal processes, which I think our friends are aware. Yeah. When the people were making dams for water in one particular area, the dams are producing electricity, so the politician said, the water has become bad, electricity has been taken out of it. So, if you don't understand cause effect, you make such statements. You don't understand cause and effect. And there's no way that you could convince a politician about it. Yes. तो मैं ट्रांसलेशन करता हूँ. तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि हम जब साधना करते हैं तो सामान्यतः कहा जाता है कि सांस को जानिए, शरीर को जानिए. तो वो कहते हैं कि चित्त जो है, मन जो है, उसको जान रहा है. तो अब आप जैसे कह रहे हैं कि मन को जानिए, तो मन को कौन जान रहा है? तो बंते जी ने जवाब दिया कि हमको ये समझना होगा कि जो हमारी सजगता है, अवेयरनेस है, उसकी कैपेसिटी है जानने की, बेसिक कैपेसिटी है जानने की. और ये भाव कि जानने वाला कोई है, ये हमारा फंडामेंटल डिल्यूजन है. ये सबसे भारी मोह है जिसके कारण कि मैं का भाव जागता है और वो हमको दुखी बना के रखता है. हमको ये समझना चाहिए कि ये जो मन की कई प्रक्रियाएं हैं, उसमें ये भी है कि हम जान सकते हैं कि मन में क्या हो रहा है. ये सब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ करने वाला है, कोई जानने वाला है. मन का ये स्वभाव ही है कि वो जानता है. और ये ही जो डिल्यूजन है, ये हमको बंधन में रखता है. और अगर हम इस बात को ठीक से समझ जाएं तो बड़ी फ्रीडम महसूस होती है कि हर चीज़ कॉज, हर जो भी कुछ होता है संसार में, उसका कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण का कुछ वो रिजल्ट भी होगा. तो और वो जो मन की स्थिति है कि वो हर प्रतिक्षण उदय होता है, व्यय होता है, वो भी हमको अनुभव के आधार पर समझ में आ सकती है. अभी आते जब हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कॉजल प्रोसेस समझने की कोशिश करें कि किस कॉज से कैसा इफेक्ट होता है. आपने उदाहरण देके बताया, जैसे कि बिजनेस है, उसमें भी एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है. और या कोई मशीन बना रहे हैं, उसमें अपनी नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उसमें भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ही है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज कोई चीज़ है या बिजनेस का कोई एसेंस है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और इस डिल्यूजन के फ्रीडम से ही बहुत भारी लाभ होता है कि हम जो है जो बंधन हमें लगा रहता है उससे मुक्त होने के कारण का ये बहुत भारी तरीका है, बहुत भारी कारण है कि हम बंधन में बंधे रहते हैं, क्योंकि मैं का भाव हमेशा बना रहता है। और इसका इफेक्ट उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जैसे हमारे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हमको अच्छा अनुभव नहीं हुआ तो हम समझते हैं आई एम नॉट ए गुड पर्सन, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं बहुत असफल आदमी हूँ। और अगर सक्सेस होती है तो हम समझते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। ये बेसिक डिल्यूजन है। हमको समझना चाहिए कि सक्सेस और फेलियर के अपने अपने कॉजेज हैं, अपने अपने कारण हैं, और उन कारणों के कारण ये हो रहा है। तो ये जो सचमुच में पीसफुलनेस जो आती है वो तभी आती है जब हमें इस बात का अवेयरनेस हो जाए कि कारण और उसका इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट जो है वो प्रतिक्षण चलता रहता है। अगर कॉज उपलब्ध है तो इफेक्ट होगा ही। किसी आदमी की, किसी करने वाले की, किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं है कि किसी कॉज से कोई इफेक्ट पैदा हो। और ये जानकारी जो है हमको सचमुच में इट मेक्स अस ट्रूली पीसफुल। तो हमारे जो शांति का है, सच्चीमुच शांति का अनुभव होता है। Okay, we'll have a short break and come back and have some meditation, some quiet time. विश्राम करेंगे थोड़ी देर और फिर ध्यान करेंगे।